Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. I hope you are all good. So students, in this video we are discussing important current affairs for 8th of January. The session will be quite interesting and important. Stay tuned with us till the end. In this video we are talking about Dharmendra Pradhan ji, our education minister, who has released 55 literary works in classical Indian languages. Then Indian Railways has electrified almost 99.2% of their network and the target was November 2025. Then HPCL, they have commissioned the world's first LC Max residue upgradation facility, and the location where this has been launched in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Then Niti Aayog, they have launched the 5th edition of the Trade Watch Quarterly Report. We will be discussing all these things and many more in this video, so stay tuned with us till then. The content we provide students is top notch and it is very beneficial for all the students who are preparing for competitive exams. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Let's start with national affairs students. First is Dharmendra Pradhan, our education minister, as you can see him in the picture, has recently released 55 literary works in classical Indian languages. This was during an event that was held in New Delhi and it was to promote India's linguistic heritage, inclusive access to classical knowledge. Right? Take a note of this. This compilation includes literary works in Kannada, Telugu, Malayalam, Odia, Tamil. Here I want to give you a homework students. You have to tell me how many classical Indian languages are there. Right? Comment below. And they comes under which article of the Constitution of India. Right? So a total of 55 literary works were launched here. So take a note of it. Moving on. Next, here you can see among these literary works, 14 books. Right, they will be covering, or these 14 books here, if we 41 books here, if we talk about them, they were developed by the Center of Excellence for Classical Languages under the CIIL, that is in Mysore, Karnataka. Then here if we see 13 books, they were by CICT of Tamil and Tirukkural Sign Language series. And the aim was here to promote linguistic heritage, to promote India's culture, tradition among the young generation so that they can read these books and flourish. Next is Indian Railways. They have electrified almost 99.2% of their network by November 2025. See, what we used to happen was earlier the railway was using coal as a fuel, but we know burning coal creates a lot of pollution. So it was decided that we will be shifting from coal to electrification or to electricity. That is the reason you must have seen that above the railway tracks, huge number of these wires are laid down. This is for providing electricity, right? And this type of structure is there that is connected to these wires to provide electricity to the main coach. Now everything is being digitized, now everything is being electrified now. Even we are seeing that there has been a revolution in electric vehicles from earlier IC vehicles, right? That was using diesel and petrol. Now we will be seeing that green hydrogen will also be a game changer in the future, but let's not come to this. We are discussing about the railway sector, right? So in Indian Railways, we have seen that almost 99.2% of the network in India has been electrified and the target was achieved here in November 2025. Almost, if we see here, that 69,427 route kilometers, right, have been electrified. Correct? And we can see here that is almost 100% electrification we are seeing. If we look at the data, the electrification expanded from just 1.4 kilometer per day in 2004 to 2014 to an average of over 15 kilometer per day between 2019 to 2025. Right? Next.
Here you can see the rest of the data. If we see, India also surpassed major countries such as China, where 82% electrification is there, France where 60%, Russia 52%, UK 39%. If we talk about Indian Railways solar power capacity, we are at 898 megawatt as of November 25, and also the target here is to achieve 100%. We are almost there. Moving on. Next is HPCL. HPCL recently commissioned the world's first LC Max residue upgradation facility, and this facility is located where? It is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, right? LC is your liquid conversion maximum residue upgradation facility. This is at the refinery in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, right? This, if we talk about this facility, this is the first residue hydro racking unit. It has a capacity of 3.55 million tons per annum, and it can convert about 93% of low value bottom of the barrel oils into high value products. That means it can convert low value oil to high value oil such as your diesel, jet fuel, gas oil, right, and other middle distillates. Correct. So the aim of this facility that has been commissioned in Visakhapatnam by HPCL, that is Hindustan Petroleum Corporation Limited, is to convert low value oil into high value products such as diesel, jet fuel and gas oil. Correct. And this facility is located where? It is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Here the investment of almost 31,407 crore rupees was invested in setting up this particular unit. Next students, Niti Aayog has launched the 5th edition of Trade Watch Quarterly Report. I repeat, recently Niti Aayog, right, and Dr. Arvind Virmani, the member of Niti Aayog, has launched the 5th edition of Trade Watch Quarterly Report, and this is for the first quarter from April to June month. Right, this report provides a comprehensive and data-driven analysis of India's trade performance in the context of evolving global economic conditions. The key focus here was India's automotive export, right? That how we are exporting our automotive or automotive parts here, right? And we have seen here that if we talk about the data, let me show you that our country, India, contributed almost $30 billion, that is 1.4%, to the 2.2 trillion global automotive market. Here, the report also suggests that the global trade in goods and service has reached 2.5%, that was earlier 2%. Also, if we talk about goods trade, specifically for the goods trade, it is at $209 billion, whereas the service sector trade is at $230 billion. Right? Take a note of this. This report released by Niti Aayog. This is your Trade Watch Quarterly Report. This is the 5th edition of the report. Focus is on the automotive export sector, and here we have seen the data. Next is Indian Army has granted the supply order to Tata Advanced Systems Limited for Pinaka MLRS overhaul. MSRL is your multi-launch rocket system, right? So you can say this is Pinaka, right? That is first generation Pinaka multi-launch rocket systems, right? This is for first, and second is for battery command post, right? This is a PPP model, that is your public-private partnership model in the defense, correct? And here it is Indian Army, they have granted this order to Tata Advanced Systems Limited, correct? And it is based on PPP model, that is public-private partnership model. Here 80% indigenization will be done. That means we can say it is made in India, because we know in order to qualify for made in India, it is 50%, 60% of the goods should be made indigenously and procured indigenously. So I repeat, we are talking about Indian Army. They have granted the supply order to which company? It is to Tata Advanced Systems Limited. It is for what product? It is for Pinaka multi-launch rocket systems. This will be based on which model? It will be based on PPP model, that is public-private partnership, and almost 80% indigenous content will be used in it, that will be qualifying for Make in India product. If we talk about Tata Advanced Systems Limited, we have discussed multiple times, they are setting up a plant in Dholera, which is in Gujarat, and this plant is a semiconductor manufacturing fabrication plant. If we talk about Tata Advanced Systems Limited, who is the managing director and chief executive officer here? Sukran
Singh. Headquarter of this is in Hyderabad, Telangana. Right, students? Moving on. Next is Simply Learn. They have joined the India AI mission to accelerate the AI literacy for 10 million citizens. See, students, AI is the game changer now. AI is used everywhere in each and every sector, and it is revolutionizing each and every sector. We are seeing better result with the help of AI, and but on the negative side, we are also seeing that a large number of job cuts are seeing in multiple sectors. So here, Simply Learn, this is a platform that is providing upskilling, right? They provide various certification course and they are engaged in the skilling of individuals. So Simply Learn, which is a global digital upskilling platform, they have entered into a strategic partnership with India AI Mission. India AI Mission, it was launched by the government of India. If asked about the ministry, it is MEITY. They have launched this India AI Mission, and the focus here is what? Of this India AI mission, so that we can bring AI in India, we can work upon various large language models in India and incorporate the AI in multiple sectors in India, right? So Simply Learn, they have partnered with this India AI mission, right? To what? For what reason? For providing artificial intelligence literacy to almost 10 million citizens in India. Correct? Take a note of this. Here, free national course will be provided to everyone so that they can understand AI. They can understand what is AI, how AI is used, how we can benefit in our life from artificial intelligence. Correct? So this will be the main focus. Moving on, next is MIB. MIB is your Ministry of Information and Broadcasting. They have their platform is WaveX. We remember few months back this WaveX was launched. This is a startup accelerator initiative of MIB. They have recently signed memorandum of understanding with FIIT of IIT Delhi to boost the media tech innovation. So we are seeing now the startups, the entrepreneurs specifically in the media sector will be encouraged here under this memorandum of understanding, right? So WaveX, they partnered with Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi, that is of IIT Delhi, correct? And this is for boosting the tech innovation in the media sector, helping the startups in the media sector to grow, helping the entrepreneurs to do more research and development to come up with better use cases and enhance the ecosystem development in the media tech innovation sector. So remember this MOU. So with this, we will be seeing innovation in the media sector, we will be seeing entertainment sector growing, and better communication technologies will be coming into the play. Next is DRDO. DRDO has celebrated the 68th Foundation Day and the event was held at New Delhi. Right, so important thing to remember here is that it is the 68th edition of this Foundation Day. Here if we talk about DAC, Defense Acquisition Council, right, they have recently accepted 22 orders that are worth 1.3 lakh crore rupees, and these orders, if we talk about them, they are quite important for the Indian Armed Forces. Right, students, so important takeaway from this news is that it is the 68th Foundation Day and the event for which was held in New Delhi. Next is banking and finance. HDFC Bank has integrated the digital rupee CBDC into the smart gateway platform. See, CBDC, what is CBDC? Central bank digital currency. See, cryptocurrencies, they are also considered the online rupee, or we can say we call them the digital currency, right? Similarly, India thought that why not we should have our own Indian currency, our digital currency, which is also known as the digital rupee. So this CBDC, the other name for this CBDC is your digital rupee. So HDFC Bank, they integrated this digital rupee into an online merchant platform, that is Smart Gateway. What will happen with this, or what was the aim of doing this, was so that we can use this digital rupee for transaction on this particular Smart Gateway, and the merchants can send money and receive this digital rupee based on the transaction, based on the amount they need to send or receive. So it will be game changer, as with this the transactions will be settled at the end of the day, and here these digital rupees can be sent and received easily. This will be more safe and secure. So what we discussed here, it is HDFC Bank, they integrated this digital rupee, that is your CBDC, that is central bank digital currency, into what? Into the Smart Gateway platform, right? This will provide secure and sovereign backed digital payment option. Even Japan, they have launched a Japanese yen that was 1-to-1 backed according to their digital currency. Next is Federal Bank. They have unveiled the refreshed brand identity, that is the Fortuna Wave.
Bank. They have unveiled a refreshed brand entity, that is the Fortuna Wave. Right? This is a part of a strategic brand refresh to the signal modernization and future readiness. Right? This was in presence of Vidya Balan, the famous actress, also the brand ambassador of Federal Bank. Right? So this is the Fortuna Wave. This is the new refreshed brand identity here. It was in presence of whom? Vidya Balan. Right, here the design, if we see, it is fluid, it is adaptable, it is round, and a yellow underlined digital friendly palette. Moving on, next is awards and recognition. So let's talk about the IRFC. IRFC is what? Indian Railway Finance Corporation. This is a Navratna company, and they have been recently granted the excellent rating from DPE for the 5th consecutive year. What is DPE? Department of Public Enterprises. Now, what is the aim of this rating? Why this rating is granted? This shows the strong institutional performance and consistent delivery of IRFC, and for that reason they were granted with excellent rating. Right, and it is for the 5th consecutive year they were granted this. If we talk about IRFC, students, it was established in 1986, and here remember that this has reached an annual sanction target of almost 60,000 rupees or 60,000 crore rupees by the third quarter of FY26. Resignation. K. Bala Subramaniam assumed the charge as the chairman of AERB. What is AERB? Atomic Energy Regulatory Board. This is India's apex nuclear safety regulator, and he has been appointed here for a period of 3 years. So tenure, question will be asked, what is the tenure of K. Bala Subramaniam as the chairman of AERB? It is for 3 years. He will be succeeding whom? Dr. D.K. Shukla. Next is Government of India. They have extended the Abhishek Dev's tenure as the chairman of APEDA. Right, that is your Agriculture and Processed Food Export Development Authority. Take a note of this. The tenure has been extended by what year? By how many years? So it has been extended by 1 year. Next is Science and Tech. NASA's Hubble telescope has discovered the first starless gas cloud, Cloud 9. What does this mean? Starless gas cloud. We know that our planets, all the planets, the stars, they are made up of gas, right? And after billions of years, these gas combine together and they form planets, the stars. So what this cloud 9 is, this is just made up of gas. There is no star there, right? No planet found there. And it is NASA's Hubble telescope. They have discovered this starless gas rich dark matter cloud, which was nicknamed as Cloud 9. Moving on, next is Indian scientists. They have discovered the first ever supercomputer powered simulation to model the Pemba effect, right? That is to simulation to model Pemba effect, right? So Indian scientists from Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research in Bengaluru, Karnataka, they have developed the first ever supercomputer powered simulation to model this Pemba effect. What is this Pemba effect, students? You should know about this, then only you will be able to get idea why this is important. Pemba effect is basically hot water freezes faster than the cold water. I repeat, this Pemba effect states that hot water, it freezes faster than the cold water freezes, right? So to demonstrate this, right, to demonstrate this Pemba effect, right, this supercomputers, right, they have simulation or they have developed this simulation to model the Pemba effect, correct? And it was done by Indian scientists. That is why it is important. Next is Pakistan has conducted the successful flight test of the Taimur ALCM. ALCM is your air launched cruise missile. This was deployed from the Mirage 3E fighter aircraft during the live trial exercise, and it was done by Pakistani Air Force. The strike range here is of 600 kilometers. Then next is important days. Earth's rotation day is observed on 8th of January, students, right? We observe the Earth rotation day. This will be the asked question. So it will be on 8th of January. And here it is to commemorate the birth anniversary. Or why do we observe this day, right? It is basically to mark the Leon Faucet's proof of Earth rotation. That is to mark Leon Faucet's proof of Earth's rotation in 1851, right? He conducted a experiment, basically that was a rotation experiment, right? Or basically it was a pendulum experiment.
pendulum experiment, right, for which to honor him we observe this Earth's rotation day on 8th of January, and this year it was 8th of January we observe this, that is, or we can say it was the 175th birth anniversary for Leon Foucault's demonstration. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. It will be quite beneficial for you all. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning regularly. And then based on the daily current affairs video, we upload the weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise videos. These are MCQ based, and the content framed here, the questions, the MCQs that are framed are based on the exam pattern, and you must have seen multiple questions that we provide regularly to you are coming in the exam. So do watch these videos. These are quite beneficial for you all. Now let's move to the revision part. Next, which organization signed a contribution agreement with SIDBI, that is SIDBI's venture capital fund only, that is Small Industries Development Bank of India Venture Capital Limited, in November to launch 1000 crore rupees space venture fund that is aimed at strengthening India's space tech startup ecosystem. So which organization has signed this contribution? It is with InSpace. InSpace is the commercial arm of ISRO only, right? And this agreement is for setting up a venture capital fund for 1000 crore rupee that will be for India's space tech startup. Right, students? Next, where did the 11th edition of India-Sri Lanka joint military exercise Mitra Shakti commence in November to enhance bilateral defense cooperation and joint counter-terrorism capabilities under United Nations mandate? It is Belgavi, Karnataka. Next is in November, it is GSW Energy Limited that is commissioned India's largest green hydrogen plant in Vijayanagar in Karnataka. Location is important and it is India's largest. Right, students? Next, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ma'am inaugurated India's first modern river ferry terminal in November, where this gateway terminal and jetty was located. So it is located in Guwahati, Assam. Moving on, mark the incorrect statement regarding the export sector schemes approved by the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi. If we see here, the incorrect statement, A is right, C is right, B is wrong, which is our answer. Correct, take a note of this. It is saying that the credit guarantee scheme for the exporters provide 50% credit guarantee coverage by NCGTC to MLIs, right? And it is for additional credit up to 20,000 crore rupees valid till March 2026. Correct. So it is valid till 31st of March 2026. And here if we see 20,000 crore rupees additional credit is also right. But if we look at this number, right, that is the scheme provides 50% credit guarantee coverage. No, it is not 50% but 100% credit guarantee coverage. Next, identify the mineral that was not included in the Union Cabinet's approval of the rationalized royalty rates in November, aimed at boosting domestic production and reducing the import dependence. It is nickel. Next is which state emerged as the first in India to roll out the amended BharatNet scheme in November, a rural broadband initiative aimed at enabling e-health, e-education and e-governance services. It is Punjab state. Important. Next, name the country that became the world's first cashless society in November, where cash circulation accounts for less than 4% of the GDP. It is Sweden. Next, identify the Indian National Park that earned good rating from IUCN, that is International Union for the Conservation of Nature, in their 4th edition of the World Heritage Outlook, becoming the only Indian site to achieve a positive conservative assessment. So, which is that Indian National Park? It is Kanchenjunga National Park. Where is this located? It is located in Sikkim. Also remember this World Heritage Outlook. This was released during the IUCN World Conservation Congress that was held in Abu Dhabi, UAE. Next, which organization has released State of the Food and Agriculture report titled Addressing Land Degradation Across Landholding Scales in November, highlighting India among the countries with the highest yield loss due to the human-induced land degradation? Which is it? It is Food and Agriculture Organization, right? Take a note, this is an arm of UN. Moving on. Next, the 29th edition of the multilateral exercise Malabar, involving the participation of Quad nations, began in November. Which are the Quad countries? If we see here, India, USA, then Australia and
Japan. These are the 4 countries quad, and they conduct an exercise that is Malabar exercise. This is the 29th edition of this Malabar exercise. Right? Question asked is that the exercise was hosted by which country? It is United States of America that hosted this exercise, and the navies of these countries, they took part here. And this time, if we see from Indian side, INS Shahadri took part in this exercise. Next, identify the South Asian country that became the first in the region and the 56th globally to join UN Water Convention on 20th of June. It is Bangladesh. Next, which country was ranked as the world's happiest city? Recently launched Time Out Cities Life Index, while Mumbai topped the Asian happiness chart here. So, which city was ranked as the world's happiest city? It is Abu Dhabi, UAE. And if we talk about the Asian cities, it is Mumbai that secured the top position here. Next, and globally also Mumbai, India, it secured 5th position. This is globally. Next, identify the sector where India and Vietnam, they have signed a memorandum of agreement for mutual search, rescue support and cooperation on the sidelines of the 15th India-Vietnam Defense Policy Dialogue held in Hanoi, Vietnam. So, identify the sector where India and Vietnam signed a memorandum of agreement. It is in the submarine sector, right? For submarine cooperation, research and development and innovation of it. Next, mark the correct statement regarding President Draupadi Murmu ma'am's visit to Angola. If we see here, all these 3 options are rightly mentioned. Next, in November, which Indian public sector bank surpassed 100 trillion rupees in total business and crossed $100 billion mark capitalization for the first time? It is State Bank of India. Right? It is State Bank of India. Next is Renew Energy Global PLC. They have secured how much amount of financial package from Asian Development Bank? This is worth $331 million financial package from Asian Development Bank in November to support 837 megawatt peak hybrid renewable energy project that will be established in Andhra Pradesh. Next, name the country where NPCI International Payment Limited partnered with Benefit, that is a leading fintech company, in November to enable real-time cross-border remittances through the linkage of UPI and Fawry Plus services. It is Bahrain. Next, name the organization that recognized by RBI in November as a self-regulatory organization for payment settlement operators. So, name that organization. It is Self-Regulated Payment System Operators Association. Right? It was recognized as an SRO. Next, name the bank that launched the cultural initiative that is Bharat Surotsav in Chennai, Tamil Nadu in November, that is aimed at celebrating India's musical and cultural heritage through a multi-city fusion festival. So, name that bank. It is Federal Bank Limited. Next, according to Moody's rating, global macro 2026 growth will be steady but subdued in 2026 report released in November. India's GDP growth is expected to average dash through 2027. It is expected to average 6.5% through 2027. Next, in November, the Edelgave Foundation, in collaboration with Huron India, has released the 12th edition of the Huron India Philanthropy List. Name the philanthropist who emerged as India's most generous donor with a total contribution of 2,708 crore rupees during financial year 26. He is Shivnadar and family. Right? Take a note of this. If we average it out, he donated almost 7.4 crore rupees per day for generous efforts. Correct? If we talk about the youngest philanthropist, he will be Nikhil Kamath. He is 39 years of age, and Nitin Kamath, who is 46 years of age. Together, they were among the youngest philanthropists who donated 147 crore rupees. Next, who received the Interpol Medal for the highest order for outstanding contribution to global security and international cooperation? This was during the Middle East International Border Management and Technology Conference in Manama, Bahrain. So, who received this Interpol medal? General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa received this medal. Next, select the person who did not receive the Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika National Award, which honors individuals for their contribution towards the promotion of Northeastern arts, literature, music and social service in November. So, select the person. Arijit Singh here did not receive the Bharat Ratna Bhupen Hazarika National Award. Next, identify the insurance company
that won two major awards, that is Digital Insurer of the Year and Women Leader of the Year at the 29th Asia Insurance Industry Awards held in Singapore. So identify the insurance company. It is Go Digit General Insurance Limited, that is Digit Insurance. Next, who was honored with the Ambassador Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award, that is a Lifetime Achievement Award at the Dayton Literacy Peace Prize held in Dayton, Ohio, UAE. So here, who was honored? So Salman Rushdie was honored here. Correct? If we see for the fiction, Martyr by Kaveh Akbar was winner here, and for non-fiction, The Burning Earth. The Burning Earth by Sunil Amrit won, and Martyr was by Kaveh Akbar. Next, who won the 2025 Booker Prize for Fiction for the novel Flesh at the ceremony held in London, UK? So who won? So David Sasley has won the Booker Prize for Fiction for the novel Flesh. Next, choose the beach in Tamil Nadu that retained the International Blue Flag certification for the 5th consecutive time in November. So which is that beach? It is Kovalam Beach, and it received first Blue Flag certification in September 2021. Next, students, Justice Alok Bhushan has been reappointed as the National Company Law Appellate Tribunal Chairman till July 2026 following the approval of the ACC in November. Next, choose the country where Catherine Martina and Connolly took oath as the 10th president and on 11th of November succeeding Michael D. Higgins. So for Ireland, she has took oath as the 10th president. Next, who became the first Indian to lead the global automotive industry body, the Organization International OCIA, in November after succeeding John Bonzella. So who became the first Indian here? So Sailash Chandra became the first Indian. Next, in November, Indian Navy inducted the new indigenously built survey vessel large class ship at the Southern Naval Command in Kochi, Kerala. Identify the vessel command commenced during the event. So what is that survey vessel large ship? It is INS Ikshak. Right, and it has been built by GRSE, that is Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, and it was delivered at built at Kolkata, West Bengal, and delivered in Kochi, Kerala, to the Southern Naval Command. Next, name the quantum technology startup that successfully demonstrated India's first 500 kilometer quantum key distribution network for digitally securing communication in November. It is QNew Labs Private Limited. Next, identify the Indian state in which the ISRO carried out the key main parachute test for Gaganyaan mission in November. So where was this carried out? This parachute test, it was carried out in Uttar Pradesh for the Gaganyaan mission, that is India's maiden human spaceflight mission. This parachute system, it consists of 10 parachutes of 4 types for Gaganyaan crew module. Next, name the institution that developed India's first quantum diamond microscope in November to support neuroscience and material research. It is IIT Bombay. Then next is Tamil Nadu's Rahul versus India's dash chess grandmaster after clinching the 6th Asian Individual Chess Championship held in Philippines. So Tamil Nadu's Rahul, not versus, it is Rahul vs. He became India's 91st chess grandmaster. Right, 91st chess grandmaster Rahul vs. and he is from which state? He is from Tamil Nadu. Right, Chennai, Tamil Nadu. Next, in November, Asian Archery Federation Congress held in Dhaka announced the host country for 2026 Asian Youth Archery Championship. The championship will be hosted by which nation? It will be hosted by UAE. Next is identify the mascot unveiled for the 5th Khelo India University Games during the launch event held at Amer Fort in Jaipur, Rajasthan. So it is Khamma and Ghani. They are the mascots. Correct? Moving on, the James Davy Watson, the Nobel Prize winning American biologist who co-discovered the double helix structure of deoxyribonucleic acid, that is our DNA, passed away in November. In which year did he win the Nobel Prize in Physiology or Medicine? So he won this Nobel Prize in 1962. Next, name the eminent Telugu poet and lyricist who passed away in November in Hyderabad, Telangana, was known for composing Telangana state anthem, that is Jaya Jaya Telangana.
So right option is Ande Shri Lakshmi Narayan. Next is the World Science Day for Peace and Development, observed every year on 10th of November to highlight the importance of science in fostering peace, progress, sustainability, was marked as which edition in 2025? It was the 24th edition, right? Next, next is when is National Education Day observed? This day is observed on 11th of November, and it is observed to commemorate the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad, the first education minister of independent India. And this year it was 137th birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad. If we talk about this National Education Day, this was first observed in 2008 on 11th of November. Next is, according to State Bank of India research report released in November, India emerged as the world's second largest consumer of gold in 2024 with a total demand of 802.8 tons, accounting for 26% of the global consumption. Identify the country that topped the list as the largest gold consumer during the same period. It is China. Next, identify the country that announced in November its plan to adopt India's flagship rural development program, the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, to strengthen their own productive safety net program. So, which is it? It is Ethiopia country. Next, in November, the Airports Authority of India has signed an MOU with which state government for acquisition and operation of Naini Saini Airport. The airport is located in which state? So, this Naini Saini Airport, it is located in Uttarakhand. Next, students, India participated in the 10th edition of the global hashtag MedSafety Week campaign from November 3rd to 9th to promote medicine safety and encourage the reporting of side effects. The campaign was organized with the support of which ministry? It was with the Ministry of Health and Family Welfare. Next, in November, Sharad Malhotra was appointed as the managing director of which company's India operations, succeeding John Ten, effective from 1st of December. So it is for Nippon Paint India. Next, identify the newly discovered class of magnetic order that emerged in November as distinct from traditionally ferromagnetism and antiferromagnetism and was experimentally confirmed in 2024. So, it is altermagnetism. This is the new class of magnetic order that was discovered. Next is, in November, India operationalized the Neoma Air Base that is near the line of actual control, right? Name that state or UT that is home to this strategically important high altitude airbase. So it is Ladakh. Next, Republic of Nature, a 32-acre township featuring India's first man-made beach, was introduced by GT Bharti urban developers in November. It is located where? It is located in Chennai, Tamil Nadu, right? It is a 32-acre township featuring India's first man-made beach, right? You must have seen man-made beach in Dubai, right? Similarly, a first of its kind 32-acre township featuring India's first man-made beach was introduced by GT Bharti urban developers, where? In Chennai, Tamil Nadu. Next, in November, the Election Commission of India has signed a statement of intent with the International Institute for Democracy and Electoral Assistance in New Delhi to enhance electoral management and promote democratic governance. When was this ECI established? In 1950. Next, which financial corporation entered into a 50-50 joint venture with Mahindra & Mahindra in November to establish a life insurance company in India? It is Manulife Financial Corporation. They have entered into a 50-50 joint venture here. So these were your important current affairs for the week, students. Next, students, is our homework section. First question is, tell me, Asian Development Bank for promoting solar rooftop in India under PM Surya Ghar Yojana, what was the amount approved as a loan by Asian Development Bank? Second question, tell me, students, recently, next is IRDAI, they have imposed a penalty of how much amount on Reliance General Insurance for regulatory violations. Third question, who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Canara Bank? Fourth question, students, who has been appointed as the Chairman and Managing Director of Rail Vikas Nigam Limited? So MD and CEO of Canara Bank and Chairman and Managing Director of Rail Vikas Nigam Limited. Then fifth question, tell me, who became the first Indian cricketer to receive Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar? I repeat, Pradhan Mantri Rashtriya Bal
पुरस्कार. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. And students, one more thing, I want to see maximum likes on this video. I am seeing very few students are subscribing to our channel and not liking the video. I want both of them in this video. I want to see maximum likes and maximum subscribes coming from this particular video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा. अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. आज की वीडियो में हम बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं. इनके द्वारा 55 लिटरेरी वर्क्स लॉन्च किए गए क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में. देन इंडियन रेलवेज ने डाटा रिलीज किया जो बताता है कि 99.2% हमारा नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है. देन HPCL ने कमीशन किया वर्ल्ड का पहला LC मैक्स रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटी रहेगी, इसको डिस्कस करेंगे. एंड नीति आयोग के द्वारा अभी 5वां एडिशन लॉन्च किया गया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का. इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड बड़े ही रिफाइंड वे में डिस्कस करेंगे. तो एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान की. इनके द्वारा अभी रिसेंटली 55 लिटरेरी वर्क्स लॉन्च किए गए हैं क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में. देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी क्लासिकल नॉलेज, जो हमारी कल्चर की नॉलेज है, हमारा जो ट्रेडिशन है, वो प्रिजर्व होता हुआ दिखेगा. जो आने वाले यूथ है, जो आने वाली जनरेशन्स होंगी, उनको यहाँ पे हमारे कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस में नॉलेज मिल सकेगी. करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस. धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, जैसे तमिल, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा में. ठीक है, मार्क करेंगे. चलो आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे मैं. आप मुझे बताओ कितनी क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस है इंडिया की, नंबर बताओ, एंड उस आर्टिकल का नाम बताओ या आर्टिकल का नंबर बताओ जिस आर्टिकल में क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि इंडियन रेलवेज 99.2% इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है. पहले क्या होता था, हमें याद है कि कोल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था. कोल को बर्न करके यहाँ पे इंजन में हम पावर जनरेट करते थे. लेकिन कोल का नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. राइट, तो इसको एलिमिनेट करना है हमें, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी फॉलो करना है, हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, एंड सस्टेनेबली हम ग्रो करना चाहते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि लेट शिफ्ट टू इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, कार्स का भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है. राइट, अब तो ईवी की जगह हम देखेंगे इन फ्यूचर स्टूडेंट्स ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रोमिनेंट फ्यूल निकल के सामने आएगा. बट कमिंग बैक, अभी हम बात कर रहे हैं रेलवेज की. तो रेलवेज का 99.2% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, एंड एक्सपेक्टेड है हमारा जो टारगेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा. अगर हम यहाँ पे एक और डाटा देखें कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ वो 1.4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हुआ 2004 से 14 के बीच में. वही जो एवरेज बढ़ के 15 किलोमीटर पर डे हो गया 2019 से 25 के बीच में. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखेंगे. इंडिया ने सरपास किया है चाइना को, जो कि 82% इलेक्ट्रिफिकेशन पे है. फ्रांस 60%, रशिया 52% एंड यूके 39% पे. नेक्स्ट आ जाते हैं HPCL. HPCL क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इनके द्वारा वर्ल्ड का पहला LC क्या है, लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम. ये एक बेसिकली फैसिलिटी है जो कि इनकी रिफाइनरी विशाखापट्टनम में इस्टेब्लिश की गई है. ये लोकेशन मार्क करके चलेंगे. राइट, ये फैसिलिटी, ये जो रिफाइनरी है, ये क्या यूज़ क्या है इसका, क्यों सेटअप की गई है, ये क्या करेगी, जो आपका ऑयल है, राइट, उसको कन्वर्ट कर देगी आपका फैसिलिटीज़ में. जैसे हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अगर जो आपका लो वैल्यू जो ऑयल्स होते हैं, राइट, बॉटम ऑफ द बैरल ऑयल्स को, उनको हाई वैल्यू प्रोडक्ट जैसे डीजल, जेट फ्यूल, गैस ऑयल, इनमें कन्वर्ट कर देगी. राइट, तो इसीलिए ये फैसिलिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई. कहाँ पर रहेगी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एंड किसके द्वारा, HPCL के द्वारा बनाई गई है. नेक्स्ट आ जाते हैं नीति आयोग. नीति आयोग के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि है 5th एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट. ये रिपोर्ट बताती है इंडिया के ऑटोमोटिव
एक्सपोर्ट्स के बारे में। इंडिया काफ़ी छोटा शेयर होल्ड करता है वर्ल्ड का, राइट, जो एक्सपोर्ट में अगर हम एज अ होल बात करें 2.2 ट्रिलियन ग्लोबल ऑटोमोटिव इंपोर्ट मार्केट हमें देखने को मिलती है, हम 1.4% इसका होल्ड करते हैं, राइट। यहीं पे अगर गुड्स एंड सर्विस ट्रेड की हम बात करें, गुड्स एंड सर्विस ट्रेड की हम बात करें 2.5% से बढ़ता हुआ दिखा इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। वहीं पे अगर हम बात करें गुड्स, सिर्फ गुड्स ट्रेड की, तो 209 बिलियन डॉलर का हमने ट्रेड किया। वहीं पे अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो 230 बिलियन डॉलर की हमने सर्विस ट्रेड करी है। ठीक है, ये डाटा दोनों मार्क करेंगे। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था एंड नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर अरविंद विरमानी जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ये 5वां एडिशन है इस रिपोर्ट का। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंडियन आर्मी स्टूडेंट्स। इन्होंने ग्रांट किया सप्लाई ऑर्डर टू टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड फॉर पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का, राइट। तो ये दो चीज़ों का ऑर्डर दिया गया एक्चुअली यहाँ पे, एक तो है पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम एंड दूसरी चीज़ आ जाती है बैटरी कमांड पोस्ट का, राइट। एंड ये दोनों ऑर्डर बेसिकली PPP मॉडल पे रहेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। किसको दिया गया है ऑर्डर? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को ये ऑर्डर दिया गया है, राइट। एंड ये एक इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके दौरान ये ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि 80% यहाँ पे कंटेंट इंडिजिनाइजेशन होगा। कंटेंट का मतलब 80% यहाँ पे जो भी सामान इनको बनाने में लगेगा इंडिया से सोर्स किया जाएगा। इससे होगा क्या, हम इसको मेक इन इंडिया की कैटेगरी में दे सकते हैं, क्योंकि अगर 50 से 60% से ज़्यादा अगर हमारा कोई भी कंटेंट इंडिजीनियसली लिया गया है तो उसको हम यहाँ पे मेक इन इंडिया का दर्जा दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंपली लर्न। सिंपली लर्न बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कराता है अलग अलग स्किल्स में, राइट। एंड इनके द्वारा अभी इंडिया AI मिशन के साथ पार्टनर किया गया। देखो स्टूडेंट्स, इंडिया AI मिशन क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अगर मिनिस्ट्री पूछे तो MEITY के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस इंडिया AI का मिशन क्या है कि AI तो अब वर्ल्ड में आ गया है, राइट। AI इज़ हेयर, तो AI के ऊपर स्किल्स भी हमें पता होनी चाहिए। लोगों को AI के बारे में अवेयर कराने के लिए कि AI है क्या, कैसे वर्क करता है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इससे हम लर्निंग लेके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना एंड नए प्रोडक्ट्स को सामने लाना मार्केट में। तो सिंपली लर्न ने अभी इंडिया AI मिशन के साथ पार्टनर किया, राइट। किस लिए? ताकि फ्री नेशनल कोर्सेज यहाँ पे लाया जा सके सभी इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि AI को वो लोग समझ सकें, राइट। AI को बेटर कर सकें, AI से अपनी लाइफ बेटर कर सकें। इसके लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो सिंपली लर्न मिल गया। अब यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे सिंपली लर्न पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिससे लोग लर्निंग स्किल्स लेके इवन जॉब रेडी हो सकते हैं एंड अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इनके द्वारा कुछ टाइम पहले ये वेवएक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ये एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर इनिशिएटिव है जहाँ पे मीडिया सेक्टर में, एंटरटेनमेंट सेक्टर में स्टार्टअप्स को ग्रो करने का काम किया जाएगा, राइट। तो वेवएक्स ने अभी एक MOU साइन किया है IIT दिल्ली का। FIIT है फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ IIT दिल्ली के साथ, राइट। ये MOU साइन किया गया है ताकि मीडिया टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, मीडिया में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, राइट। तो बेसिकली मीडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि बेटर स्टार्टअप्स आ सके, बेटर इंडस्ट्री ग्रो कर सके, इवन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्रो करने का काम किया जाएगा, राइट। तो इस MOU को मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है DRDO ने अभी सेलिब्रेट किया 68th फाउंडेशन डे न्यू दिल्ली में। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। कौन सा फाउंडेशन डे? 68th फाउंडेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया। मल्टीपल डिफेंस एक्विजिशंस डील्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1.3 लाख करोड़ रुपीस की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, 22 एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की अप्रूवल्स यहाँ पर दिए गए। 11 डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए 26,000 करोड़ की लागत से। फिर 245 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हुए दिखे, राइट। देन 15 ऑपरेशनल एंड 66 नई प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। HDFC बैंक ने इंटीग्रेट किया डिजिटल रुपी CBDC को इनटू स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म। CBDC ही इसको हम डिजिटल रुपी कहते हैं, राइट। ये 1 रुपी इज इक्वल टू 1 CBDC या फिर डिजिटल रुपी है। इवन जैपनीज येन की यहाँ पे डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई थी, दैट इज बैक्ड बाय फिजिकल एसेट, मतलब एक जैपनीज येन, एक आपके जैपनीज येन डिजिटल जो है उससे बैक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 डिजिटल रुपी विल बी इक्वल टू 1 रुपी एक्चुअली, राइट। वो आपके स्टोर में होगा।
जैसे गवर्नमेंट के पास होगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट गेटवे के साथ पार्टनर किया तो पूरे दिन में जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी शाम को वो सेटल कर दी जाएंगी विद रियल मनी, राइट। ये भी रियल मनी है, बस उसका डिजिटल फॉर्मेट है। तो ये उसको मोर सिक्योर बनाता है, सॉवरेन बैक डिजिटल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जीरो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रहेंगी मर्चेंट्स के लिए। एंड इससे होगा क्या, इस डिजिटल रुपी से मर्चेंट्स इस प्लेटफॉर्म की मदद से पैसे को भेज सकते हैं दूसरे को एंड दूसरों से पैसे रिसीव कर सकते हैं। एंड HDFC बैंक ने इंटीग्रेट किया है RBI CBDC को इनटू देयर ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म जो कि है स्मार्ट गेटवे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फेडरल बैंक। इन्होंने अभी अनवेल किया रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी जो कि है फॉर्चूना वे, राइट। तो ये इनकी नई ब्रांड आइडेंटिटी। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो यहाँ पे इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन, वो भी इस इवेंट पे प्रेजेंट थी एंड उनके द्वारा भी यहाँ पे इसको अनवेल किया गया। चलिए मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं अगर मैं बात करूँ अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक नवरत्ना कंपनी है एंड इनको एक्सीलेंट रेटिंग दी गई है अभी डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज के द्वारा। रीज़न बीइंग क्यों, क्योंकि इनकी जो डिलीवरी रही है अपने सर्विसेज की, राइट, अपना जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे परफॉर्मेंस इनके द्वारा दिखाई गई है एंड कंसिस्टेंट डिलीवर किया गया है इन्होंने अपनी सर्विस को लेके, इसीलिए इनको यहाँ पे एक्सीलेंट रेटिंग से सम्मानित किया गया बाय DPE। एंड ये 5वीं साल लगातार है, 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है इनको यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया। फिर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। के बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ AERB। AERB है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर के बोर्ड के तौर पर, राइट। 3 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे एंड सक्सीड किनको करेंगे, डॉक्टर DK शुक्ला को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया अभिषेक देव जी का टेन्योर बाय 1 ईयर एज द चेयरमैन ऑफ AEPDA। यह है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA। इनका टर्म 1 साल से एज द चेयरमैन ऑफ AEPDA एक्सटेंड यहाँ पे कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक, अभी नासा के हबल टेलीस्कोप के द्वारा पहला स्टारलेस गैस क्लाउड डिस्कवर किया गया जिसका नाम रखा गया Cloud9। देखो हमारे जो प्लैनेट्स, हमारी जो गैलेक्सी, ये कैसे बनते हैं, बहुत सारी गैस एक एरिया में इकट्ठा हो जाती है एंड विद टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक रॉकी फॉर्मेट में कंबाइन हो जाती है, राइट। तो वो प्लैनेट बन जाता है। तो गैस का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एरिया में टू फॉर्म द प्लैनेट्स, टू फॉर्म दी स्टार्स। तो अभी साइंटिस्ट के द्वारा, इनके हबल टेलीस्कोप के द्वारा एक ऐसा स्टारलेस गैस क्लाउड डिस्कवर किया गया कि मतलब वहाँ पे पूरी गैस ही गैस है, देयर इज़ नो स्टार, वहाँ पे कोई भी स्टार नहीं है, कोई भी प्लैनेट नहीं है। उसका नाम रखा गया है Cloud9। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर पावर्ड स्टिमुलेशन मॉडल पेम्बा इफेक्ट का। पेम्बा इफेक्ट क्या होता है, ये कहता है कि जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज होगा, हॉट वाटर freezes faster than cold water। इसका सिमुलेशन किया गया, राइट, एंड इसको प्रूव यहाँ पे किया गया इन दिस यूजिंग दिस सुपर कंप्यूटर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन है। सुपर कंप्यूटर से इसको इफ प्रूव किया गया, इसका मॉडल बनाया गया पेम्बा इफेक्ट का। किसके द्वारा, इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, इनके द्वारा ये फीट अचीव की गई। इसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ तैमूर ALCM एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। इसकी 600 किलोमीटर की रेंज रहेगी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। अर्थ रोटेशन डे हम 8 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं एंड अर्थ की रोटेशन के बारे में यहाँ पे पता लगाया गया था। इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, पेंडुलम एक्सपेरिमेंट करा गया था। किसके द्वारा, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे लियोन फॉलकॉट, राइट। इनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1851 में एंड इसको ऑनर करने के लिए, इस पेंडुलम एक्सपेरिमेंट को, जिसको फॉलकॉट पेंडुलम हम कहते हैं, इसको इस एक्सपेरिमेंट को ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। बड़ा ही रिफाइंड कंटेंट हम यहाँ पे लाते हैं आप सभी के लिए एंड इसी के बेसिस पे वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज लाते हैं MCQ फॉर्मेट में। ये MCQs आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, आपको एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी वीडियो से, हमारे कंटेंट से देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पर।
Next, identify the South Asian country that became the first in the region and 56 globally to join UN Water Convention on 20th of June. So identify that South Asian country. It is Bangladesh. It is Bangladesh. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस सिटी को रैंक किया गया वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी इन रिसेंटली लॉन्च टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025, जहाँ पे मुंबई ने टॉप किया इन द हैप्पीनेस चार्ट. तो आबू धाबी यूएई ग्लोबली टॉप करती है एज द हैप्पीएस्ट सिटी. वहीं पे अगर मैं एशियन कंट्रीज की बात करूं तो एशियन रीजन में मुंबई महाराष्ट्र ने टॉप किया, वेयर अगर ग्लोबली बात करें तो मुंबई 5th पोजीशन पे आती है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो सेक्टर को जहां पे इंडिया एंड वियतनाम में एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया फॉर म्यूचुअल सर्च रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग. किस सेक्टर के लिए? सबमरीन के लिए, सबमरीन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन कैरी आउट करने के लिए. नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू अंगोला. तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे यहाँ पे, राइट. तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है. फिर आ जाते हैं, नवंबर में किस इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने सरपास किया $100 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बिजनेस एंड क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. फिर रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी इन्होंने सिक्योर करा कितने अमाउंट का अभी एक ऑर्डर, जो कि है $331 मिलियन का ऑर्डर. कहाँ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक से नवंबर के महीने में, ताकि 837 मेगावाट पीक का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके. कहाँ पर? लोकेशन रहेगी आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है एनआईपीएल इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, इन्होंने पार्टनर किया बेनिफिट के साथ, जो कि एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है. कहाँ की है ये बेनिफिट? ये बहरीन की है. इससे होगा क्या? यूपीआई यूसेज बढ़ जाएगी बहरीन में, एंड मर्चेंट्स एंड यूजर्स इंडिया और बहरीन के एक दूसरे के साथ इजीली पेमेंट कर सकेंगे, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पे कर सकेंगे बिटवीन इंडिया एंड बहरीन. नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय आरबीआई एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, राइट. तो वो है सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन. नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव भारत श्रोत्सव चेन्नई तमिलनाडु में, जिसका एम रहेगा एट सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू अ मल्टी सिटी फ्यूजन फेस्टिवल. तो वो है फेडरल बैंक लिमिटेड. कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग ग्लोबल मैक्रो 2026 ग्रोथ विल बी स्टेडी बट सबड्यूडेड इन 2026, राइट. ये रिपोर्ट नवंबर में रिलीज की गई. एंड इंडिया की जो जीडीपी एक्सपेक्टेड है वो कितनी है? वो है 6.5% की. कितनी? 6.5%. नेक्स्ट, द एल्डेलगे फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ह्यूरन इंडिया, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट. नेम द फिलैंथ्रोपिस्ट हु एमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट जनरस डोनर विद अ टोटल ऑफ 2708 करोड़ रुपए की डोनेशन. अगर हम इनकी डेली एवरेज देखें तो डेली 7.4 करोड़ रुपीज इन्होंने डोनेट करे. वो है शिवनादर एंड फैमिली. अगर मैं यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करूं तो वो है निखिल कामत एंड नितिन कामत. ये दोनों भाई हैं एंड इन्होंने 147 करोड़ रुपीज डोनेट करे हैं. नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन. तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को? ये हैं जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा. नेक्स्ट, उन पर्सन को सेलेक्ट करो हु डिड नॉट रिसीव द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड विच ऑनर्स इंडिविजुअल्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, सोशल सर्विस इन नवंबर. तो अरिजीत सिंह को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया था. नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 2 मेजर अवार्ड जीते, जो कि है डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर एंड वीमेन लीडर्स ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड, जो कि सिंगापुर में हुई. तो ये है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जो कि है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी. इनको 2 अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे. फिर आ जाते हैं, किनको ऑनर किया गया विद द एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रोक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के दौरान, जो कि डेटन ओहायो यूएसए में देखने को मिला. तो किनको सम्मानित किया गया इससे? वो है सलमान रुशिद. नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने अभी 2025 का बुकर प्राइज जीता फॉर फिक्शन नॉवल फ्लैश के लिए. तो वो है डेविड साजले. नेक्स्ट, चूज द बीच इन तमिलनाडु जिन्होंने रिटेन किया अपना इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को. तो वो है कोवलम बीच एंड ये इनका 5वीं बार है कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया. पहली बार सितंबर 2021 में सम्मानित किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस अशोक भूषण हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज कहाँ के चेयरमैन. तो इनको रीअपॉइंट किया गया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन.
नेक्स्ट आ जाते हैं चूज द कंट्री, जहाँ पे कैथरीन मार्टिना एंड कॉनोली इन्होंने ओथ ली एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द 11th नवंबर। ऑन 11th ऑफ नवंबर ये सक्सीड करेंगी माइकल डी हिगिंस को। तो आयरलैंड की ये 10th प्रेसिडेंट बन गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कौन है वो पहले इंडियन टू लीड द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री OCIA को। कौन है वो है शैलेश चंद्रा। नेक्स्ट पे आते हैं इन नवंबर इंडियन नेवी इंडक्टेड द नया इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप जो कि है INS इक्षक। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, GRSC लिमिटेड के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सदर्न नेवल कमांड को इसको अभी डिलीवर किया गया, राइट, ये इनको हैंडल करेगी। एंड ये कहाँ पे रहेगी, कोची केरला में इसको डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं उस क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉर डिजिटली सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन नवंबर। तो वो है क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को इन विच इसरो इन्होंने कैरी आउट किया मेन पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन इन नवंबर। तो यूपी में ये टेस्ट कराया गया था। टोटल 10 पैराशूट्स रहेंगे, 4 तरीके के इसमें पैराशूट्स हैं। नेक्स्ट उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इन नवंबर जो सपोर्ट करता है न्यूरोसाइंस एंड मटेरियल रिसर्च को। तो कौन सा है वो IIT, वो है IIT बॉम्बे। राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी तमिलनाडु के राहुल VS ये बन गए इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाते हैं अभी एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस हुई, ढाका बांग्लादेश में हुई। इन्होंने अनाउंस किया कि होस्ट कंट्री इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया होस्ट कंट्री। तो कौन होस्ट कर रहा है इसको, ये UAE होस्ट करेंगे एशियन आर्चरी यूथ या फिर हम बोले एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2026 को UAE होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो मैस्कॉट फॉर द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इवेंट लॉन्च हुआ है एट अमेर फोर्ट इन जयपुर राजस्थान। तो कौन से वो मैस्कॉट है, वो है खम्मा गनी, ये मैस्कॉट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जेम्स ड्यूई वॉटसन, ये नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इनका निधन हो गया नवंबर में। इन विच ईयर डिड ही विन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो किस साल में इन्होंने जीता, वो 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द एमिनेंट तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट जिनका निधन हो गया अभी नवंबर में इन हैदराबाद तेलंगाना। ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग द तेलंगाना स्टेट एंथम जो कि है जया जय हे तेलंगाना। तो कौन है, ये है एंडे श्री लक्ष्मी नारायण। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 नवंबर को। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया, तो 24वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं नेशनल एजुकेशन डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं, 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस बार 137वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी एंड 2008 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। बताया गया कि इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड विद अ टोटल डिमांड ऑफ 82.8 टन्स अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, देन सेकेंड पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करो द कंट्री दैट अनाउंस इन नवंबर देयर प्लान टू अडॉप्ट इंडियाज फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू स्ट्रेंथन देयर ओन प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम। तो वो है इथियोपिया। मूविंग ऑन, नवंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक MOU साइन किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन नैनी सैनी एयरपोर्ट। ये नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में रहेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ द ग्लोबल #मेड सेफ्टी वीक कैंपेन 3 से 9 नवंबर तक टू प्रमोट मेडिसिन सेफ्टी एंड एनकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स। द कैंपेन इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था विद द सपोर्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं शरद मल्होत्रा, इनको अपॉइंट किया गया MD ऑफ विच कंपनीज इंडिया ऑपरेशंस। राइट, ये सक्सीड करेंगे जॉन टैन को। तो निपन पेंट इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं MD। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूली डिस्कवर्ड क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। पहले 2 तरीके के ऑर्डर हम सोचते थे होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। लेकिन अभी डिस्कवर किया गया है एंड इसको प्रूव भी किया गया फिजिकली, राइट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑल्टर मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ऑपरेशनलाइज द
न्योमा एयरबेस जो कि नियर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ दैट इज होम टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस, तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी रिपब्लिक ऑफ नेचर। ये एक 32 एकड़ की टाउनशिप है जो फर्स्ट मैन मेड बीच रहेगी इंडिया की। इसको जीटी भारतीय अर्बन डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर लोकेटेड रहेगी? ये चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के साथ मिलकर टू एनहेंस इलेक्टोरल मैनेजमेंट एंड प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। व्हेन वाज दिस ईसीआई एस्टैब्लिश? 1950 में ईसीआई को एस्टैब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं विच फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा एंड महिंद्रा इन नवंबर, ताकि एस्टैब्लिश किया जा सके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, तो वो है मनुलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। Next, students, is our homework section. First question is, tell me, Asian Development Bank for promoting solar rooftop in India under PM Surya Ghar Yojana, what was the amount approved as a loan by Asian Development Bank? Second question, tell me, students, recently, next is IRDAI, they have imposed a penalty of how much amount on Reliance General Insurance for regulatory violations. Third question, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Canara Bank? Fourth question, students, who has been appointed as the chairman and managing director of Rail Vikas Nigam Limited? So MD and CEO of Canara Bank and chairman and managing director of Rail Vikas Nigam Limited. Then fifth question, tell me who became the first Indian cricketer to receive Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. I repeat, Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. And students, one more thing, I want to see maximum likes on this video. I am seeing very few students are subscribing to our channel and not liking the video. I want both of them in this video. I want to see maximum likes and maximum subscribes coming from this particular video.